गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डेटा एक्सक्लूसिविटी इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एक्सक्लूसिविटी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिससे कि कंसर्न्स रेज हो रहे हैं अबाउट अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। तो अब हम समझते हैं डेटा एक्सक्लूसिविटी है क्या। जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई ड्रग बनाती है तो वो एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल का डेटा ड्रग रेगुलेटर को सबमिट करती है, ये प्रूव करने के लिए कि मेडिसिन सेफ है और इफेक्टिव है। जब ड्रग का पेटेंट पीरियड खत्म हो जाता है तो बाकी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जेनरिक वर्जन जो है प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कर देता है रेगुलेटर, उसी डेटा का यूज़ करते हुए। अब डेटा एक्सक्लूसिविटी इस सिस्टम को पूरा चेंज कर देगी। कैसे? जो इनोवेटर कंपनी है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हो जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल डेटा के फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब फिर रेगुलेटर जो है वो अलाउ नहीं कर पाएंगे जेनरिक वर्जन्स को जो है प्रोड्यूस करना बाय डिफरेंट अदर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो एक तरह से पेटेंट से भी आगे जाने का एक स्टेप है। जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स को या तो वेट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिविटी पीरियड को ख़त्म होने का, या फिर अपने खुद की कॉस्टली क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स करके फिर वो मेडिसिन बना पाएंगे। अब इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपको पता है ग्लोबली हमारे फेमस है जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से। नियरली 90% इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो जेनरिक्स पर ही फोकस करती हैं, और इंडिया के ड्रग लॉज करंटली जो है वो डेटा एक्सक्लूसिविटी को नहीं अलाउ करते। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंटर मिनिस्ट्रियल और इंडस्ट्री लेवल कंसल्टेशंस होल्ड की हैं एग्जामिन करने के लिए कि क्या डेटा एक्सक्लूसिविटी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये मूव जो है ये ट्रेड नेगोशिएशन से लिंक्ड है, क्योंकि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या इवन यूएस के साथ भी जो ट्रेड डील हो रही है उसमें ये एक हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट बन रहा है कि स्ट्रॉन्गर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, उसकी वजह से लार्ज स्केल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कहा है कि उनका कोई प्रपोजल नहीं है ये डेटा एक्सक्लूसिविटी को इंट्रोड्यूस करने का। तो एक तरह से दिखा रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जो ये करना चाहते हैं। तो डेटा एक्सक्लूसिविटी जो है उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि उससे क्या होगा, जेनरिक मेडिसिन नहीं आ पाएंगी बहुत लंबे टाइम तक। हायर ड्रग प्राइसेस होंगे क्योंकि एक्सटेंडेड मार्केट मोनोपोली बना कर रखेगी वो कंपनी जिसके पास ये एक्सक्लूसिविटी होगी डेटा की। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं लो इनकम पॉपुलेशंस के लिए वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो की कंसर्न यही है डेटा एक्सक्लूसिविटी का कि इससे ऑफ पेटेंट ड्रग्स जो हैं उनको तक भी प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि इनोवेटर कंपनीज जो है एक्सक्लूसिविटी जो है वो 20 साल से भी ज़्यादा के पीरियड तक मेंटेन करके रखेंगी, उससे मोनोपोलीज एक्सटेंड होंगी बिना किसी फ्रेश इनोवेशन के। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेटा एक्सक्लूसिविटी जो है वो इंडिया के जेनरिक लेड ग्रोथ मॉडल को वीकन करेगा, और मोस्ट ऑफ द इंडियन फर्म जो है वो ओरिजिनल ड्रग डिस्कवरी में नहीं काम करती हैं, वो बल्कि जेनरिक मेडिसिन पर काम करती हैं। तो इससे जो है पेटेंट चैलेंजेस और कंपल्सरी लाइसेंसिंग को भी जो है वो खतरा होगा। तो सीडीएससीओ जो है उन्होंने एक एक्चुअली नोटिस इशू किया था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या करंट रेगुलेशंस एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं ओरिजिनल ड्रग डेवलपर्स और जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। तो क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि इससे जो है इनडायरेक्टली डेटा एक्सक्लूसिविटी बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच लाना चाहता है सीडीएससीओ। इंडिया की कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि ऐसे डेटा एक्सक्लूसिविटी लाना है, लेकिन फिर भी जो है कुछ डिपार्टमेंट्स जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड 2025 पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, जो कि इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये 3 एग्जिस्टिंग लॉज जैसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, इन सबको एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव कोड में बनाना चाहता है। तो कई तरह के जो ये 3 लॉज हैं इनको मर्ज किया जा रहा है। ये डेकेड ओल्ड स्टैट्यूट्स जो हैं इसमें ओवरलैपिंग और रिडंडेंट प्रोविजंस थे, तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। और इस कोड के अंदर जो सेबी के मेंबर्स हैं वो 9 से बढ़कर 15 हो जाएंगे। न्यू कोड इवन जो है ब्रॉडन कर रहा है स्कोप कि फैमिली मेंबर्स के इंटरेस्ट जो हैं अगर वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ रहे हैं सेबी के मेंबर्स में, तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो टाइट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्म्स इसमें लाए जा रहे हैं। कोड एम्पावर करेगा गवर्नमेंट को कि सेबी बोर्ड मेंबर्स को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो रिमूव कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दोनों दिखाने होंगे बोर्ड मेंबर्स को। तो लेसर वायलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, लेकिन जो मार्केट अब्यूज़ अगर होती है तो उसमें सिविल और क्रिमिनल एक्शन दोनों लिए जाएंगे।
कोड जो है वो सेबी को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो एक इन्वेस्टर चार्टर बनाए, स्टैंडर्डाइज करे ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है। इवन स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरीज को एक सिंगल कोड के अंदर लाया जा रहा है। बिल जो है वो कोऑर्डिनेशन इनेबल करेगा अमंग रेगुलेटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ला रहा है इंडिया में, और रेगुलेटरी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। टॉपिक आपके गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में इंडिया ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स को टॉप किया है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है? 1999 में बनाई गई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि कोलैबोरेटिव वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है डोपिंग फ्री स्पोर्ट के लिए। डेवलप करती है, हार्मोनाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है एंटी डोपिंग रूल्स को और पॉलिसीज को अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स एंड कंट्रीज। और ये फंडेड है इक्वली बाय ओलंपिक मूवमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसका फाउंडेशन बोर्ड है वो इसका हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चिलाई कलन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर जो है वो एक स्पेल ऑफ रेन और स्नोफॉल के बाद चिलाई कलन के सीजन में एंटर कर रहा है। चिलाई कलन क्या होता है? 40 डे का पीरियड होता है जहाँ जब हार्शेस्ट विंटर कोल्ड होती है कश्मीर रीजन में। तो चिलाई कलन जो है वो यूजुअली शुरू होता है दिसंबर 21 को, और पर्शियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो नाइट होती है 21 दिसंबर की, जिसको शबे यल्दा कहते हैं, तब से ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है। और कश्मीर वैली जो है हार्शेस्ट फेज ऑफ विंटर सीजन में एंटर कर जाती है। लेकिन चिलाई कलन जो है वो रिप्लेनिश कर देता है वाटर रिजर्वायर्स हायर रीचेज में, जिसकी वजह से जो है रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स सस्टेन होती हैं ड्यूरिंग समर मंथ्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सीरिया। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक किया है इस्लामिक स्टेट ग्रुप सीरिया पे। तो ये सीरिया क्या है? ईस्ट कोस्ट में कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी के पास, साउथ वेस्टर्न एशिया में। टर्की, लेबनान, इराक, जॉर्डन, इसराइल इनके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। डमास्कस इनकी जो है वो कैपिटल सिटी है। यूफ्रेट्स रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई जो है वो इराक में एंटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सदर्न ओशन। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि सदर्न ओशन जो है वो ग्लोबल सरफेस वार्मिंग को मिटिगेट करता है, क्योंकि ये लार्ज पोर्शन ऑफ कार्बन जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज होता है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो सदर्न ओशन, जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि सदर्न ओशन जो है वो वर्ल्ड का ओशन का सदर्न मोस्ट पोर्शन है। ये लोकेटेड है ऑन द लोअर एंड ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, इंटेंस स्टॉर्म्स होती हैं, ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस होते हैं और कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं। और ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट से डोमिनेटेड रहता है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मरीन इकोसिस्टम्स है ये अर्थ का। और ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर में अराउंड द ग्लोब, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is data exclusivity in pharmaceutical sector. This topic is important for your governance and economy section. So Union government is contemplating the introduction of data exclusivity in the pharmaceutical sector, but this has raised concerns about delayed access to affordable generic medicines and the future of India's generic driven drug industry. So when a pharmaceutical company develops a new drug, it must submit extensive clinical trial data to the drug regulator to prove that the medicine is safe and effective. Traditionally, once a drug's patent expires, the other manufacturers are allowed to produce those generic versions using the same approval process of that original drug. But data exclusivity changes this system. It grants the innovator company exclusive rights over its clinical trial data for a fixed period. Okay, and during this time, regulators are not allowed to rely on this data on the data to approve generic versions, even if the patent has expired. As a result, generic manufacturers must either wait for the exclusivity period to end or conduct its own costly clinical trials. So this protection works alongside patents, but it is distinct from them. While patents protect the invention, data exclusivity protects the underlying test data. Okay, and we know that Indian pharmaceutical sector is globally known for its generic drug manufacturing capacity. Nearly 90% of Indian pharmaceutical companies focus on generics rather than on developing new molecules. And currently, India's drug laws do not provide data exclusivity. But as per a report, government recently held interministerial and industry level consultations involving the Commerce Ministry, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, and even Pharmaceuticals Department and Health Ministry to examine how data exclusivity could be implemented. So this move is coming
due to trade negotiations, especially with countries like EFTA or even US trade deal. And the expectation is that a stronger intellectual property protections could attract large scale foreign investments. Health Ministry has officially stated that there is no proposal from its side to introduce data exclusivity, and this is indicating divergence within the government. So, introducing data exclusivity could have serious consequences for public health and the affordability also. So, this would lead to delayed entry of generics even after patent expiry, higher drug prices due to an extended market monopoly, higher reduced availability of life saving medicines for low income populations. A key concern is also A key concern is also that data exclusivity can protect even off patent drugs, allowing the innovator companies to retain exclusivity beyond the standard 20-year patent term, which can effectively extend monopolies without any fresh innovation. So, experts are also arguing that data exclusivity would weaken India's generic led growth model because most Indian firms do not invest in original drug discovery. It could also undermine patent challenges and compulsory licensing, which are the tools that India often uses to balance innovation with public health needs. So, what has happened is that CDSU issued a notice suggesting that current regulations create an uneven playing field between original drug developers and generic medicines and generic manufacturers. Critics argue that this framework indirectly supports a data exclusivity based regulatory model. And interestingly, India has no international obligation to introduce data exclusivity. Okay. So the next topic is Securities Market Code 2025. This topic is important for your governance section. So Securities Market Code 2025 has been tabled in Parliament, proposing a sweeping overhaul of India's securities regulation framework. It consolidates three existing laws: the Securities Contracts Act, the SEBI Act, and the Depositories Act, into a single comprehensive code. So this bill proposes to merge and replace existing three laws, which three securities laws, and these decades old laws contain overlapping and redundant provisions. The aim is to build a single principle based framework which reduces interpretative conflicts and improves legal certainty. Under the code, the board for SEBI will now expand from 9 to 15 members, and earlier laws required only disclosure of pecuniary interest, but now the new code is having tighter conflict of interest norms because it broadens the scope to include even family members' interests also of the members of SEBI. So this code empowers the government to remove SEBI board members for conflict of interest or convictions involving moral turpitude. So this mandates disclosure of direct or indirect interest and expands the board members also. Uh, it is decriminalizing the lesser violations by only introducing civil penalties, but market abuse would invite both civil and criminal action. So the code also requires SEBI to specify an investor charter, standardized grievance redressal across intermediaries and issuers. Even stock exchanges, clearing corporations, and depositories are brought under a single code. The bill also enables coordination among regulators. So, this bill is incorporating international best practices by strengthening regulatory governance, accountability, and transparency. Okay. So the next topic is World Anti-Doping Agency. This topic is important for your social issues and your international relations. So recently, for the third consecutive year, India has topped the World Anti-Doping Agency's global list of offenders. So the WADA was established in 1999 as an international independent agency to lead a collaborative worldwide movement for doping-free sport. It aims to develop, harmonize, and coordinate anti-doping rules and policies across all sports and countries. It is funded equally by the Olympic movement and governments of the world. Its headquarters is in Montreal. The foundation board is the highest policy making body of this agency. Okay. So the next topic is Chilai Kalan. This topic is important for your environment section. So Kashmir is basing for a spell of rain and snowfall, and the region is set to enter Chilai Kalan. So Chilai Kalan is a 40-day period of the harshest winter cold in Kashmir region. It begins on 21st December, when the night of the 21st December is called the Shabe Yalda, that is the night of birth. And the Kashmir Valley faces its harshest phase of the winter season during this phase, and Chilai Kalan replenishes also the water reservoirs in the higher reaches, sustaining the rivers, streams, and lakes during the summer months.
So the next topic is Syria. This topic is important for your international relations. So recently, U.S. military has carried out a strike against Islamic State group in Syria. So this country is located in the east coast of Mediterranean Sea in southwestern Asia. It is bordered by Turkey, Lebanon, Iraq, Jordan, and Israel. Its capital city is Damascus, and Euphrates River flows across Syria before entering Iraq. So the next topic is Southern Ocean. This topic is important for your environment section. Scientists have recently found that the Southern Ocean mitigates global surface warming by taking up a large portion of the carbon released by human activities. So Southern Ocean is also known as the Antarctic Ocean. The International Hydrographic Organization describes the Southern Ocean as the world ocean's southernmost portion. It is located on the lower end of the Pacific, Atlantic, and Indian Ocean, and it includes the tributary seas around the Antarctic region. It is known for its strong winds, intense storms, dramatic seasonal changes, and cold temperatures. It is dominated by the Antarctic Circumpolar Current, which is the longest, strongest, and deepest reaching current on Earth. So, this Southern Ocean is one of the most productive marine ecosystems on the Earth, also, and it also plays an important role in the circulation of water around the globe. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.